Lines of symmetry. रोटेशन सिमेट्री के अंदर ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, थ्री डी सिमेट्री, थ्री डी फिगर्स के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए, सिमेट्री का मतलब है कि एक शेप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए, एक शेप जो है उसका मुझे मिरर इमेज मिले। ठीक है, सिमेट्री। अब हो सकता है कोई शेप सिमेट्रिकल हो सकता है सिमेट्रिकल। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लेता हूँ आई, तो कोई बता सकते हैं कि मैं आई को कितनी तरह से कट कर सकता हूँ कि वो उसका मिरर इमेज मिले? One horizontally and one vertically. जी, वन हॉरिजॉन्टल एंड वन वर्टिकल। ठीक है, तो अगर यहाँ से कट करूँ तब भी मिरर इमेज आ रहा है, और यहाँ से कट करूँ तब भी मिरर इमेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर टू लाइन्स। ठीक है, अब अगर मैं लेता हूँ लेटर ए, तो लेटर ए की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? वो कैसे? हॉरिजॉन्टल बीच में से काटोगे तो वो नीचे वाला उस जैसा थोड़ी होगा। अगर आप यूं काटोगे तो ये ऊपर वाला यूं हो गया और नीचे वाला यूं हो गया, ये सिमेट्रिकल थोड़ी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक। जी, ठीक है, सर तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जी बोले। सर सर्कल थ्योरम हम लोग कब करेंगे? इसके बाद कर ले। सर्कल थ्योरम जो ग्रुप लेसन्स है उसमें तो मैं करवा चुका हूँ, डिटेल में करवा चुका हूँ। मगर आप लोग एग्जाम्स के लिए जो ग्रेड 10 वाले हैं और अभी अपेयर नहीं होंगे, तो आप मैं दोबारा करवा दूंगा उसको। क्लास रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, करवा चुका हूँ मैं। ठीक है सर। ठीक है, बताओ लेटर ई। ई का बताओ। बस एक दफा हॉरिजॉन्टल ही होगा। ठीक है, ये बात। ठीक है, अच्छा, जो शेड्स होंगी, शेड्स जो होते हैं उनके अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है ये याद करनी है आपने। ठीक है, या बना भी सकते हैं आप, तो ये याद कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। वो आपसे पूछेंगे कि शेप में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स शो कर देता हूँ, और उसको अपने पास नोट कर ली। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये एक लीव है, तो इसमें कितनी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन सकती है? अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, एक डायगोनली हो सकता है बस। ठीक है, ये हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। सही, तो आपको ये देखना है कि कितनी बार वो शेप जो है वो मिरर इमेज बन रहा है। सही, मिरर इमेज बनना जरूरी है कि उसको आप उसके ऊपर फोल्ड कर सकते हैं, उसको आप उसके ऊपर फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सही बात समझ आ रही? मिरर इमेज का मतलब कि आप उसको बीच बीच में से काट के फोल्ड कर सकते हैं उसके ऊपर, तो दैट्स व्हाट यू कॉल मिरर इमेज। ठीक है, चलिए।
Let me show you the shapes. टू डी शेप्स में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और थ्री डी शेप्स के अंदर जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है. ठीक है, क्विकली ड्रॉ करना है आप लोगों ने. ठीक है, अपने पास बना लीजिएगा. एंड हिज मीटिंग में. ठीक है, चलिए जल्दी से ड्रॉ करें. सारी बनानी है अभी. ये सारी बना लो. स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो. सर इससे पहले जो आपने लिखवाया था वो जरा वापस खोलने में उसकी स्क्रीनशॉट. वो मैं शो कर दूंगा, पहले ये कर लूं फिर वो शो कर. पैरेललोग्राम के अंदर इस वजह से नहीं है कि पैरेललोग्राम किसी भी तरह से सिमेट्रिकल नहीं होगा. यानी कि आप उसको उसके ऊपर फोल्ड कर नहीं सकते. बीच में से काटे, बीच में से काटे तो बीच में से काट के उसको थोड़ा सा जूम करो कि वो जो शेप होगा वो उसके ऊपर फोल्ड नहीं हो सकता. ये लास्ट में नहीं होगा ना, किसी भी तरह से नहीं. Let's suppose this is a parallelogram. कहाँ से काटे उसको बताओ. ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल में काटो. इसको हॉरिजॉन्टल काटूंगा. ठीक है, ठीक है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल काटा. मेरे इमेज का मतलब क्या है, काटो. ठीक है, मेरे इमेज का मतलब ये है कि बिल्कुल वही शेप आना चाहिए. अब अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, चलो मैं तो शो भी कर देता हूँ. इसकी वीडियो दिखा देता हूँ. पैरेललोग्राम उमर क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना. से आवाज नहीं आएगी, मैं समझाता रहूंगा साथ साथ. ठीक है, किसी भी एक्सेस पे आप इसको फोल्ड कर रहे हो. ठीक है, ठीक है, मैं ये वीडियोस भी शेयर कर दूंगा मोरोवर, क्या आप देख लीजिएगा. ठीक है, सर आपसे क्वेश्चन है. जी जी. सर रेक्टेंगल में खाली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हुए हैं, 4 क्यों नहीं हो सकते. सोर्स से नहीं हो सकते कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो है वो सिमेट्री नहीं देंगे. आप जब रेक्टेंगल को डायगोनल से काटोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड नहीं हो सकते, ना लेफ्ट ना राइट. ठीक है सर. ओके सर
अगर हम डायगोनल में काटेंगे तो वो उसका मिरर इमेज होगा ना, अगर लाइक हम स्क्वायर या स्क्वायर नहीं लाइक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम को जैसे साइड से काटे। मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि मिरर इमेज तो फोल्ड हो सकते हैं ना। अच्छा, सर रोम्बस को ऊपर नीचे से क्यों नहीं काट सकते? लाइक उसका मिरर इमेज क्यों नहीं बन सकता? एक मिनट, तो वो ना रोम्बस का मिरर इमेज नहीं बन रहा। देखो जब ये टिल्टेड होता है ना, टिल्टेड होता है तो फिर हम उसको जब काट के उसके ऊपर यानी उसको फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, टिल्टेड है तो फिर उसके कोने निकलते हैं, जैसे भी हमने पैरेललोग्राम में देखा था। ठीक है, और रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है? रोम्बस जो है उसमें आपके पास इंक्लाइंड है रेक्टेंगल, ठीक है, और रोम्बस जो है इट्स एन इंक्लाइंड स्क्वायर। तो दोनों के अंदर जो है वो ये चीज है, ऑल साइड सेम जी, मगर ऑल साइड जो सेम है मगर वो 90 डिग्री नहीं बना, ठीक है। सर डन। ठीक है, so this was the order, this was the these were the lines of symmetry. अच्छा, अब हम जाएंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में। रोटेशनल सिमेट्री क्या है बेटा, कि आपने एक फिगर को कितनी टाइम्स यू कैन रोटेट इट सो दैट द फिगर इज हैविंग द सेम शेप। मिसाल के तौर पे इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, 360 रोटेट करना है, ठीक है, और इसको 360 रोटेट करना है एंड आई कैन सी हाउ मेनी टाइम्स आई एम गेटिंग द सेम शेप। ओके, सो ये देखिए, let me number them: 1, 2, 3, 4. Okay, how many times I'm getting the same shape in a complete 360 rotation? 2 दफा। All 4 times. Look here, one 90-degree rotation, okay, 180, like this. So okay, you need to see how many times I'm getting the same shape. Okay, same shape. This is the first one. Okay, so okay, one. Is it the same? Is it the same? So visualize करो, one on the right, two on left. Okay, इसको मैं ऐसे भी रहने देता हूँ, ठीक है, और मैं कॉपी करता हूँ ताकि आप उसको देख के, ओके,
90 degree. Is it same like that? Yes. Okay. One over one. This is 90 degree rotation. Okay. 180 degree rotation. So it's coming the same two. Okay. Three and four. Okay. So this has got the order of rotational symmetry. Scroll down, Carlo. Okay. How many times this is having the order of rotation symmetry? sir. Hmm. So this is having order of rotation symmetry as two. Okay. So this depends. Okay, this depends upon how many like देख के अंदाजा हो जाएगा. You can just visualize and see how many times this can be rotated so that it gives the same shape. Okay. For instance, if I shade some boxes like this, okay, and I wanted to give a 360 rotation. So look here. Let this be the original one. Okay. So this is the original one. Okay. Two, three, and four. So this one is having order of rotation symmetry is how much? 4. Two. ये देखो जब मैंने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे हमेशा क्लॉकवाइज 90 डिग्री ओके then 180 degree then 270 and then again 360 okay so two times it's coming this okay we'll ask you how much to write down the order of rotation symmetry okay okay then I make sure guys okay you can just quickly screenshot this one as well regular pentagon regular hexagon okay उमर इसको भेज दो ग्रुप में जो स्क्रीनशॉट लिया है. ये किसी और ने स्क्रीनशॉट लिए भेज दो ग्रुप में.
Okay. So if this is a parallelogram to regular polygon, जितनी size उतने उसके order rotation symmetry. Okay. Rhombus to circle unlimited trapezium line guide. Okay, screenshot. Okay. Square 4, table 2, rhombus 2, kite 1, parallelogram 2, equilateral triangle 3, isosceles trapezium 1, hexagon 6. Okay, screenshot. For irregular polygons, okay, irregular polygons we just need to, there's no need to memorize all these shapes in the lines. We just get used to what the shape looks like with the symmetry. That's it. Draw the line of symmetry, all lines of symmetry of this shape. So this is what? This is a regular pentagon. Okay, regular pentagon. Let's go more. Take it straight. Okay, this is one. I don't think so. Horizontal. Then ऊपर से आएगा सही हो रहा है ना ऊपर से यहाँ से ये हो रहा है ना जोर से और सही यूज करते total we'll be having 5 lines of symmetry. Two, three, four, draw lines of symmetry. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lines. Okay, eight corners. So there are 8 because this is sort of a regular octagon. Okay, all right. Clear? Now the important thing is the planes of symmetry for 3D shapes. Okay. So instead of line of symmetry, instead of the what you can say the axis of symmetry, we do have the planes of symmetry. And you guys need to memorize this. It's so important. And this is not in all levels, it's in IGCSE. So we need to remember this. Okay. Can somebody read this, Shazam? Or into the kind of it? What is a plane of symmetry?
A plane is a flat surface that can be any 2D shape. A plane of symmetry is a plane that splits a 3D shape into two congruent, identical halves. If a 3D shape has a plane of symmetry, it has reflection symmetry. The two congruent halves are identical mirror images of each other. All prisms have at least one plane of symmetry. Cubes have nine planes of symmetry. Cuboids have three planes of symmetry. Cylinders have an infinite number of planes of symmetry. The number of planes of symmetry in other prisms will be equal to the number of lines of symmetry in its cross section plus 1. Pyramids can have planes of symmetry too. The number of planes of symmetry in pyramids will be equal to the number of lines of symmetry in its 2D base. If the base of the pyramid is a regular polygon of n sides, it will have n planes of symmetry. समझ आया गौरव? A plane is a flat surface that can be any 2D shape. A plane of symmetry is a plane that splits a 3D shape into two congruent identical halves. तो बिल्कुल इसको सही समझ लो कि एक प्लेन है जो 3D में लाइन नहीं होती. In 2D you have a line of symmetry, but in 3D you have a plane of symmetry. Okay, because 3D is like three dimensional. So how can you cut a 3D shape by a single line? So rather you will have a plane. Okay, it's just like that. थोड़ा सा इसको visualize करना. You need to visualize and observe what's happening. Okay, so okay, so they will give you a shape and they will ask you how many order, like cases of symmetry does it have. That's it. Okay, get it? That's it. Center is infinite because it's center is like a circle, no? Circle is infinite. That's why. Circle has infinite lines of symmetry. Pyramids can have planar symmetry too. The number of planes of symmetry in pyramids will also be equal to the number of lines of symmetry, and that is 2D base. Pyramid के bases जो होते हैं वो different होते हैं. We can have a square based pyramid, we can have a rectangle based pyramid, we can have a triangular based pyramid. Okay, so the planes of symmetry depends upon the base of the pyramid. ठीक है? So if the base, yes. Okay, have a note of this.
Screenshot is enough. Okay, you just need to memorize how many planes of symmetry does it have. That's it. It's more likely to be in your non-calculator paper. Okay, for some reasons. That's it. Okay. So can 3D shapes? Yes, they can have. 3D shape will be able to rotate it around different axes. Depending on which axis the shape is rotated, 3D shapes can have rotation symmetry. Recall the rotation symmetry. It is how many times the shape looks the same. When it about 360 degrees. See the example of a triangular prism. Triangular prism, if it is rotated, okay, so it looks the same 3 times when it's rotated. Okay, 1, 2, 3. It has a rotation symmetry of always 3. This is the axis of rotation symmetry. So if they give you the axis of rotation symmetry, so along that axis you're going to rotate. You can just see that red dot is changing. Red dot is on the top. On a rotation, it comes to the right side. On the next rotation, it comes to the left side, and again it comes to the top. So 3 times in a complete 360 rotation, it looks like the same. Make sense? A square pyramid has rotation symmetry order 4 about the vertical axis as it has square base. Okay, so 4 times if it is rotated. Okay, rotation is vertically now, so it's going to look the same 4 times. Okay, in a complete 360 rotation, every 90 degrees is going to look the same. So it has a rotation symmetry of 4. Cylinder has infinite rotation symmetry about the vertical axis, and its cross section is a circle. This would also be true for a cone. Okay. Okay. Number of planes of symmetry for this cuboid. So cuboid has got 3 different planes. Look here. One is 8 and 5. The other one is 11 and 5. And the other one is 8 and 11. Okay? So it is going to have 3 planes of symmetry. Getting or not? एक बार हम इसको काट सकते हैं इस तरह से, एक बार हम इसको काट सकते हैं 11 और 8 के उसमें. Okay? And one time we can cut it by this one, 8 and 5. Okay? And the other time we can cut it as 5 and 11. So 3 planes of symmetry. I hope it's clear. Okay? Okay. This one is important. Write down the order of rotation symmetry of the following shape. Now, how are you going to do? You can use a tracing paper. Okay? How you can do it using the tracing paper? Tracing paper, आप अपने साथ, I'm not sure what is happening at the Gulf countries, पाकिस्तान में देखिए वाला.
ठीक है. So what you are doing, you have marked the center with your pen or pencil, okay? And then you start rotating and see how many times, okay? So when you give, as you turn the tracing paper, count how many times the shape was the same as the original. Okay? Be careful here that this shaded square is not quite the same as the original. You tell, भाई सिर्फ ये नहीं देखना कि shape same है. You need to see where the shaded box is coming. Okay? So this is the scene. Back to the region. First towards it. So okay. So it has rotation symmetry for it. This means the shape can never have order zero. At least one तो होगा. ठीक है? A shape with rotation symmetry order 1 may be considered as not having any rotation symmetry. Okay? Because 360 में one time so वापस वही आ जाएगा. See? Same stuff. ठीक है भाई, I hope it's clear. Okay, show the shape below shade exactly 4 more squares so that the shape has rotation symmetry of order 4. चलो ये थोड़ा सा तुम लोग करो इसको. ये देखो. We have to shade 4 more squares so that it has a rotation symmetry of order 4. यानी कि जब भी हम इसको घुमाएं तो we are going to get the same shape. So easy. सर टॉप में दो शेडेड एरिया के साथ जो दो क्लियर हैं वो हम शेड कर देंगे आई थिंक. और फिर नीचे के जो दो बीच में शेड हैं उनके साथ जो हम उनको शेड कर देंगे. फिर आपके पास रोटेशनल सिमेट्री आई थिंक 4 है. So this is the original one, okay? So you guys are saying say shade this one. ये क्या है? Okay, you have shaded this one. Okay. और कौन सा? Bottom left. These ones. Okay. Mhm. Okay. So let us see for all the 360 rotation, is it coming the same or not? The tracing paper will help you for this, okay? I'm rotating it, okay? First time, okay? Same, same है क्योंकि वो shaded वैसे ही जैसे था, ठीक है? Same, okay? Again the same, okay? Two marks, maximum 2 marks, okay? So this is going to be a question possibly from your paper too. Not your paper. Okay?
So this is symmetry. Now you guys can go into the past papers. Okay, I've given you the main idea about this. So let's see. Zero, four. ठीक है तो you guys can start doing them and please let me know if you have any difficulties and then the questions कर लेते हैं ठीक है तो this is the same thing okay so starting from question number 1 I want your participation please whoever wants to participate just speak out please oh no So the first one will be 4. write down the order of rotation symmetry of this diagram so I think it should be 4 okay so because it's exactly symmetrical है ना so all for all 90 90 90 90 any rotation is going to give 6 okay now we have to draw the lines of symmetry okay this one and two diagonals agreed Sir, second question में order 2 है rotational symmetry का. 3 2. Second question में the diagram has rotational symmetry of order 2. Go. order 2 yes okay so if we have something like this okay so I want to rotate it no this one is okay no this one is okay so in a complete 360 we get 2 times it is the same right in the order of rotation symmetry of this diagram yes top 3 on bottom and from the left side
order of rotation symmetry चाहिए. How many times in a complete 360 is going to look the same? So it's still what you guys are going to do. You can use a tracing paper. It's so easy. Okay. This is the original. Okay. So 90 degree. Is it the same? No. Okay. 180 degree. Is it the same? Yes. One हो गया, ठीक है? No. Yes. 360 में दो बार ये अपने जैसा वापस आ रहा है. So it is having an order of rotation symmetry as is it true or not? Sir, clear है. Okay. So this is stuff. Okay, well, we'll go again with symmetry. Up now it depends on you guys how you guys are going to tackle this topic. Going to the past paper, do all of them at once. Okay? Sit down and do all of them at once. I will trash it so you can easily attempt them. Have a tracing paper from some stationery shop. Okay? You'll try to do this. Very easy peasy questions. Okay? ये वाले आईजीसीएसई के होगा ओ लेवल के पास पेपर्स में शेयर कर देता हूँ ड्राइव. सो उनके पेपर वन में आता है तो आप वहां से भी कर सकते हैं. ठीक है, उनके क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा चैलेंजिंग है तो आई शेयर ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू. ठीक है, तो अभी मैं नमाज के जाऊंगा. इफ यू गाइस वांट टू स्टे इन द मीटिंग यू कैन, इफ यू वांट टू लीव यू कैन. ये के टॉपिक यही करा रहा था मुझे कल का एजेंडा लेके इंशाल्लाह वी डूइंग सेट्स एंड डायग्राम्स और एक एक्स्ट्रा लेसन वीकेंड पे करके आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे. सो यू विद द सिलेबस. ओके, फिर आप लोगों के असेसमेंट्स मॉक्स और क्विजेस. ठीक है, चलें सर नमाज के लिए जाते हैं. चमक के लिए जाएगी. Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz. Okay, sir. Last test. Last case.